Pretty little baby. Am I live? Okay, we are live. Okay, we are live. खुद की आवाज सुन के अजीब लगता है. Okay, we are live, guys. We are alive. Pretty little baby. अभी क्या करना है? अभी मेडिवल इंडिया, बिहार मेडिवल. Oh my god, you guys can see me, na? Reflector रहा है. इसे मत करो. It's actually reflecting, no? It is reflecting. Okay, that's reflecting me. पता नहीं क्यों हो रहा है. चलो डेली करते हैं. पता नहीं चलो. What's the issue? Okay. चलो स्टार्ट करते हैं. बिहार मेडिवल से रिवीजन करते हैं पहले. Pretty little baby. Hi, Dhruv Srivastav. Hello. Good evening. Good evening, everyone. What are you doing? I'm doing what I'm meant to do. I'm going to revise my stuff. After the death of Harshvardhan of Thaneshwar and death of Shashank of Gora, Yogya conquered Ujjain. Devpal conquered Ujjain. Utkal. Okay. Hi, there are lots of people. Sorry, I was already late, so I cannot talk right now. Maybe I'll take a break at 5 p.m. The most important event of Mahipal reign was the invasion of what? Bengal by Rajendra Chola. That was the last Pala king. So it is Mahendra Pal. Not Mahendra Pal. Pal king was Madan Pal was the last one. The founder Sen का हो जाएगा ये Sumant Sen and Hemant Sen. Okay. Next is Vijay Sen, Ballal Sen, Lakshman Sen. Okay. Karnat was founded by Nanyadev, and it was founded by Nanyadev. And what was the capital of Karnat dynasty? It was Simragar.
if I'm not wrong. Okay, and it was in West Champaran or Champaran. Okay, Tibet scholar, क्या नाम है इसका, Dharmaswami. That was the last great king of Karnal dynasty. It was Harshimadev was the last king. Okay, next is when Batihar was sick at Deoghot. He was killed by one of his lieutenants, um, Ali Marjan Khilji. He probably founded that was the center of Turkish rule in during this period. It was Turkish rule. It was Bihar Sharif. Bihar Sharif. Okay. Bakhtiar Khilji successfully invaded what? Lakhnauti as the capital. नहीं, Lakhnauti नहीं था, Nadia. Nadia was the capital of Lakshman Sen. Correct. That was appointed by Iltutmish as the first representative of Delhi Darbar, Delhi in India. It was Jani, some Jani. I don't know what was the name. Then he appointed Das as governor of Bengal and Das as the governor of Bihar. बंगाल का कौन सा था? राजा प्रताप रॉय? नहीं, राजा प्रताप रॉय ये तो ब्रिटिश के टाइम में था. राजा प्रताप रॉय ब्रिटिश के टाइम में था ये. और एज गवर्नर ऑफ बंगाल क्या नाम था यार इसका? कुछ ऐसे मुस्लिम सा नाम था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा. अलाउद्दीन जानी, हाँ. और इसका क्या था? ऐबक समथिंग, सम ऐबक, सैफुद्दीन ऐबक. ओके, नेक्स्ट क्या कर रहे थे? तिरुप. This was named as Tughlaqapur. Darbhanga was named as Tughlaqapur. Okay. That was the capital of Bihar during Tughlaq period. Capital of Bihar during Tughlaq period. Bihar Sharif. Bihar Sharif was the capital. Okay. Next question. Ujjain King Ram Shahi accepted. This is not important. Okay. After fleeing Nuhani chief Sher Suri claimed the title of hi, hello everybody. Sorry, I'm busy. I think यहाँ पे लिख देना चाहिए. I should write it here कि break time 5 PM. Pretty little baby. Okay. Radhe Radhe. Good evening, everyone. Sorry, I'm studying. I'll take break at 5 PM, okay? Next is Sultan Muhammad appointed Das as Farid Khan. Farid is the answer, okay. Next is Sehsa won the battle at Surajgarh. That's presently in. So it is presently in Lakhisarai. Correct? Munger Lakhisarai, ठीक है. Battle of Chausa कब हुआ था? I know this. 39 है last year. 1539. 1539. 1539. सही जवाब. This is 20 October. 26 something June. Okay, 26 June 1539. ठीक है. There's Battle of Sehsa defeated Belgram. उसके बाद है revenue system was adopted by Akbar. The name of Indian currency रुपया was given by Shersa.
Okay, next is he made Das as the capital of Bihar. Sirsa made Patna as capital of Bihar. Okay. He built a fort in Patna. He built a fort in Rohtas Fort in Pakistan. Okay. Grand Trunk Road from Peshawar, nahi, Chitgaon, which is in Bangladesh, से पेशावर से चितगांव तक है ना. Let's check. Correct. At the time, every Sarahi appointed one Karkun, his tomb at Sirsa, Sasaram, है ना, Sasaram. Okay. Sirsa met untimely death at Kalinjar, and his son was Islam Shah. Okay, next is Akbar came to Hajipur and captured Port दाऊद खान. अकबर के साथ कौन सा बैटल हुआ था यार दाऊद खान के. इट इज़ राजमहल. राजमहल होगा आई गेस. सही जवाब. ओके. नेक्स्ट इज अकबर was appointed as governor of Bihar. Das was appointed as governor of Bihar. अकबर किसको करा था. मुनीम खान. मुनीम खान का. Oh my god, याद है यार. He made Das as his capital. अकबर कैपिटल किसको बनाया था. रोहतास को बनाया था है ना. Jahangir after coming into power appointed Lal Beg. Correct. Prince Khurram or Sesa Khan-e-Durram. Bayram Beg. Okay. Next is the battle of कौन सा बैटल था औरंगजेब और दारा के बीच में. औरंगजेब और दारा के बीच में कौन सा बैटल था. याद नहीं आ रहा. औरंगजेब और दारा के बीच में देखो एक बाबर और इसके बीच में था ना. बाबर और हेमू के बीच में था. वो तो पानीपत. सामूगर. गलत हो गया. Hello, who is there? Who is watching? High Court. Oh my god. हाई कोर्ट से कौन कर रहा. baby. तो औरंगजेब और दारा के बीच में क्या हुआ. सामूगर हुआ है. कैसे. सामूगर. दारा इज लाइक सम फाइटर जो कि सूमो रेसलर है. तो औरंगजेब और दारा के बीच में सामूगर और ये क्या था. बाबर और अफगान्स के बीच में एक था ना. ऊपर हो जाओ. कहाँ गया अफगान्स के बीच में. हानी चीफ ये तो हो चुका है. बैटल. ओके. तो औरंगजेब वाला हो गया ना. औरंगजेब अपॉइंटेड
डैश एज आई शुड मार्क इट ना 30 वाला, तो ब्लू कर लेते हैं. ओके, औरंगजेब अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट करा था एज अ गवर्नर? दाऊद खान. दाऊद खान, okay. Next is Prince Azim renamed Patna as Azimabad. First coordinated Farrukhsiyar. Sikhism is comparatively youth. Yet it was its founder, तो Guru Nanak Dev. Last was Guru Gobind Singh. Okay. Nearly 14 something. 1469. Okay. Now next, the fifth Guru was Arjan Dev. Arjan Dev was the fifth Guru. And the next is Guru Gobind. 10th Guru कौन थे? 10th was Guru Gobind Singh, who was born in Patna, and Guru Arjan Dev, with whom Das was annoyed. Guru Arjan Dev was the fifth Guru, जिससे कौन था? Jahangir. Jahangir ना, या Akbar? Jahangir, okay. The ninth Guru was Tegh Bahadur, or his son was Guru Gobind Singh. The next is Sri Guru Gobind Singh, born in Patna in क्या था year? 1666. 166, okay. He announced the establishment of Khalsa on 1st Paisak. Year कौन सा था? 1669 or 89? 699, okay. 1699. The second most important release is place of 6 after, okay. Tabaqati Nasri contained a detailed invasion of Bakhtiyar Khilji. Next, Darul Adalat. Darul Adalat was built by Aurangzeb. Aurangzeb, yo. Arey, हट जाओ. Okay. In 17, Farrukhsiyar was first Muslim to be coronated. And done. हमारा बिहार मेडिवल रिवाइज हो गया है. एक गलती हो गई मेरी, which was औरंगजेब और दारा के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? सो इट्स सामूगर. सामूगर इज द बैटल जो औरंगजेब और दारा के बीच में हुई थी. ओके, तो ये हो गया. अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट I think I should go with ओके. ये रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है? should not reflect ना. एनीवेज, क्या करना था? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉलिटिकल या करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स अभी मन नहीं है, तो मैथ्स भी नहीं करने का मन है. केमिस्ट्री कर लेते ना. देखो, बायो का तो
ठीक है, याद करना है, बाकी रह गया। पूरा दिन मन नहीं है बायो पढ़ने का। Okay, let's start chemistry. So we will start chemistry. But I think you can do this. कर सकती हो फिर, याद ही तो करना। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। क्या I think I should do this chemistry का PYQs। ठीक है, केमिस्ट्री PYQs करेंगे अभी। Sure. Pretty little baby. ठीक है, केमिस्ट्री का प्रीवियस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Pretty little baby. केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं, उसके बाद आई डिसाइड कि क्या करना है नेक्स्ट। क्योंकि मेरा बायो करने का मन नहीं है अभी। करूँगी फिर बायो। कितना टाइम लगेगा ये करने में? देखते, अभी मन नहीं है यार बायो करने का, सच में बिल्कुल मन नहीं है। Can must the flowers I said for hours take from the blue bush. Pretty little baby. खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। कल रात आया मेरे घर कुछ बोला तेरा मुझे जब तेरा ऐसे क्यों do this? ऐसे हटा सकती हो और ये ऐसे मूव करते रहो, ठीक है। Telling all the bloopers. जल्दी करो जल्दी। Which of the following element does not contain neutrons? है ये क्या क्वेश्चन है? हाइड्रोजन। आई थिंक इसमें अभी ना मार्किंग भी करनी है। सो वी विल डू मार्किंग फर्स्ट। मार्किंग, उसके बाद येलो करते हैं और अपॉइंट करते हैं ना, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। Who was the first one to propose a model for the structure of atom? J.J. Thomson. Okay. पेन किधर गया मेरा? Hi Zoro Punk. What was his name? Manju. Nice to see you again.
Okay. Who was the first one to propose a model of structure of an atom? J.J. Thomson. अरे बिल्कुल. Yes, I remember. Even your name I remember. J.J. Thomson. इसके बाद Dalton's atomic theory successfully explained law of conservation, law of constant composition, law of radioactivity. I gave you nickname of Majnu because वो spelling से ज़्यादा मैच कर रहा था and it was easy as well. Law of radioactivity, law of multiple proportion. ओके तो इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर. सी है, गलत हो गया गलत. लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं है डाल्टन थ्योरी में. लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं है बाबू. गलत हो गया तुम्हारा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल विच कैन बी एडेड टू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. Particles which can be added to a nucleus of an atom without changing its neutrons. Yes, they are neutral. Okay. Oppositely तो ये क्या है क्वेश्चन? प्रोटॉन होगा. 5 का ही हो जाए. तुम ना. The components of atomic nucleus. Proton and neutron. So it's C. न्यूक्लियस ही तो पूछ रहा है. सी होगा आंसर इसका. सही है. Okay. Next is what subatomic particle has negligible mass. Dev Bastare, it was a private life. I tried to, but it was not allowed me to. ऐसा भी था क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता कि ऐसा प्राइवेट लाइव और कुछ ऐसा था. शायद ध्यान नहीं दिया. ओके. एंड पता है उस दिन ना, मतलब सच बताओ मेरा मन नहीं था पढ़ने का. पता है मेरी तबीयत तो ख़राब चल रही थी तो मेरा मन नहीं था पढ़ने का. बट उससे एक दिन पहले यू सेड कि यू वर वेटिंग फॉर लाइव ऐसा करके. तो लाइक थोड़े लॉयल होके ऑडियंस के साथ आई थॉट कि नहीं चलो 2 घंटे ही पढ़ लेंगे. और उस दिन लाइव भी मेरी बहुत कम देर की हुई होगी. तो बस आपकी उस कमेंट की वजह से आई केम लाइव एंड आई दैट. और 2 घंटे पढ़ाई भी हुई मेरी. बट हाँ, एक तरीके से मेरे दिमाग में वो आपका टेक्स्ट था कि यू वेटेड एंड ऑल. तो आई थॉट कि चलो यार ऑडियंस के साथ थोड़ा तो ऐसे अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं. तो ऐसा. बट आई वॉज बिजी विद दैट. हाँ, दैट्स ओके दैट्स ओके. वैसे देखो मेरा भी ना विन विन वाला सिचुएशन है कि चलो पढ़ाई तो हो जा रही है ना. तो ऐसा है. द एटम इज हाँ वो अलग बात है कि मेरी मेरा बैंड बज जाता है. मतलब इतने देर चेयर पे बैठने के बाद. ऐसे मेरी पढ़ाई बेड वगैरह पे, बेड पे सोते हुए पर हो या जो भी. बट ऐसे लाइव के लिए प्रॉपर आपको बैठना पड़ता है उतने देर. तो ये थोड़ा सा है, छोटा सा माइनस है बट ठीक है. Okay, so the following is an incorrect option. The atom is electrically neutral due to the presence of proton and electron inside. Neutral due to the presence of proton and electron. इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये गलत है. इनकरेक्ट. ए होगा इसका आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट. Which fundamental particles are present in ये रिपीटेड कर रहा ना, रिपीटेड क्वेश्चन. The number of electrons and neutrons and the neutrons 18 and 20.
mass number is. ये तो फॉर्मूला था मेरे पास, अभी नहीं है. तेरी अदा atomic number, mass numbers जो ऊपर है, तो atomic plus atomic is equal to atomic number plus number of neutrons. Atomic mass is equal to, so it's like कि 2 है plus neutrons number होंगे तो फिर वो भी 2 हो जाए, 4 हो जाए. एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही तो न्यूट्रॉन होता है, तो ये बराबर हो जाए. ओके, and this is atomic number is A is atomic mass and Z is atomic number. Okay. That's very interesting. अच्छा, today I woke up at 3 a.m. और आज लाइव भी थी 4 बजे से. And that time you went to sleep, na? The number was 1820. The mass number is न्यूट्रॉन दे दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हो जाएगा प्रोटॉन. सो दिस इज 18 and 20, 38. ठीक है. The mass number of nucleus is, so this is sum of the number of neutrons and protons. Atomic number, तो atomic number तो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो sum of the numbers ये हो जाएगा ना इसका आंसर शायद. तो mass of, it's not mass, ए होगा इसका आंसर. ओके, ठीक है. The sum of the numbers of neutrons, the number of neutrons, the nucleus of plutonium न्यूट्रॉन्स का पूछ रहा, तो माइनस कर देंगे, तो 42 में से 94 148. ओके. Which particle is free of charge? So free of charge is neutron. Which particle, which one of the following is positively charged particle emitted by a radioactive element? Positively charged particle emitted by a radioactive element. Radioactive Cl. डोंट गो आउटसाइड. क्यों, क्या होने वाला है? ठंड की वजह से? ठंड की वजह से डोंट गो आउटसाइड, और समथिंग एल्स? Isotopes of an element top है ना, तो it's like number of stop mass is mass per bar, and this is for number of electrons, number of protons that is element have a same atomic number, that is proton or electron, but different masses. Okay, so it's about number of protons or the mass number. It means the same atomic number, no? That is element of same atomic number but different mass number. और differ in, तो क्वेश्चन है differ क्या करता है मास में नंबर.
Nuclear fission. Because I made a wish with and I was like, real life, so if I can. नाइस, वेरी नाइस. हाँ, मैं मिली थी ना, एक पढ़ने वाली लड़की मिली थी ये फ्लर्ट करने के लिए. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट. Nuclear fission is caused by impact of bits of the following. Nuclear fission is caused by bits of the following. तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन्स. Caused by the collision of neutrons or this is the following contains the same type of atom. Mineral compound, natural elements, same type of formula, natural elements. ठीक है. This is the following carries a negative charge. Beta particles. Okay. Next. Which of the following is the electron configuration method? 2 D होगा इसका. Okay. Which of the following represent the correct electron configuration? 2 and 5. So it's C. Thank you so much. Manju. What is the mass number of? मतलब बाद में मेरे को ना रिग्रेट नहीं, थोड़ा सा ऐसे ओवर थिंकिंग आ रहा था कि पता नहीं किसी का नाम बिगाड़ के कहीं पाप तो नहीं कर दिया. कहीं बुरा ना मान जाए. So चलो यार कोई बात. What is the mass number of an element, the atom of which contains 2 protons, 2 neutrons, and 2 mass number 2 plus 4 हो जाएगा. What is the previous question? देखो तो लगता है कितना easy था. That's name you call. हाँ. ये एक्चुअली वो स्पेलिंग ना एक झलक में वही लगा, तो इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया. बाकी और कोई बात नहीं थी. आइसोटॉप्स न्यूक्लियर एटम. आइसोटॉप से तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के नंबर सेम हो जाएंगे. Number of number of neutrons is different. But the number of neutrons is different. Okay. Colloids have particle size range between 10⁻⁻10 and 2. Colloids have particle range between, I don't know this, 10⁻⁷ to 10⁻⁻10. 10 to the power -10. Okay. The modern atomic symbols are based on the method proposed by Thomson Bohr. ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग है. Which of the following elements has the largest atomic radius? Lithium. ये भी पूछ सकता है. The atomic radius of lithium is approximately radium is 153 and boron is 1. Lithium. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, beryllium and अरे ये क्यों है? कौन है साइंस वाला यहाँ? विच इज़ अ फेवरेट सॉन्ग. जो मेरे दिमाग में आता है वो मेरा फेवरेट सॉन्ग बन जाता है. एनीवेज,
यू आर फ्रॉम साइंस और मेरा साइंस बहुत हिल गया है. सो टेल मी कि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है. लाइक लिथियम का एटॉमिक रेडियस बेरिलियम से ज़्यादा क्यों है और बोरॉन से कम है, जबकि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन में तो लिथियम सबसे पहले आता है. यार मेरी साइंस कितनी खराब हो गई है. बताओ 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 बताओ. अरे बायोटेक्नोलॉजी वाला. यू आर फ्रॉम कॉमर्स है. कौन मेरे से फिर आइडिया पूछ रहा था टेक वाला कुछ ऐसा. खुद ही तो पूछ रहा था ये. दिस रेडियो समथिंग एंड साइंस कॉमर्स वालों की तो साइंस और अच्छी है. The radius of the nth stationary orbit of a hydrogen atom is proportional to 1 by n square. ठीक है, तो ऐसे होता भाई. Next, physical and chemical. An example of physical change. Burning of candle. Chemical lighting. ये तो है मेरे डॉक्स में डिसॉल्व. ठीक है, न्यू कैंडल डिसॉल्व केमिकल से. ठीक है, ये मेरे डॉक्स से कर लो तुम. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. Okay. These are the following is not एक्स ऑफ फिजिकल ये है, मेल्टिंग है, बर्निंग ऑफ कोल नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा. ओके नेक्स्ट. क्या है क्या है क्या क्या. What is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules? Answer D. Okay. Next. What is condensation? The changes of solid into liquid, gas into solid, gas into vapor, cooling energy. ठीक है, डी होगा इसका आंसर. सी है, सी into vapor into liquid. ठीक है. The amount of solid present per unit volume as per unit or per unit mass of the solution is known as amount of solute. Concentration of solute. I think इसका हो जाएगा C. Concentration of solution. There's nothing like concentration of solute, so it's concentration of solution. Electrolysis of water is decomposition reaction, क्योंकि फिर वहाँ पे टूटता है. ठीक है. For two liquids A and B. Okay. For two liquids A and B to form an ideal solution. 5 बज भी गए. I'm not taking break because it was not a very much focused session. So yeah, made form an ideal solution. The enthalpy of mixing should be 0. Ideal solution के लिए ना
3 in the x must be 0, should be 0. पता नहीं क्या है यार. For ideal solution C. Okay, according to chemistry, which of the following is an sample of physical change? Rusting, chemical boiling water, burning of wood, emission of in the air, ये भी chemical है, burning of wood, burning is a physical change, boiling of water. B होगा. Answer is B. Pretty little baby. Da, 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 da. ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये? Break time. Okay. According to the following हो गया ये. उसके बाद क्या है? Process of solid camphor into camphor vapor is called sublimation. Reflecting, I don't know. चलो ठीक है. तुम जाओ रहे हैं. Okay, fine. This is a solid camphor into camphor vapor. It's called sublimation. What is the process of substance changing solid to gaseous? तो चलो ठीक है, मैं repeat कर दिया क्वेश्चन ये. Repeated. Okay, now next the pressure is not given in the automatic LPG cylinders because they cannot replace the quantity of gas not they absorb. Pressure was not given in the domestic LPG cylinders because there's a costly the quantity of their use is not safe. They cannot represent the quantity of gas in LPG. Okay. क्या लगता है इससे तुम्हें? In addition of the salt to the pure water, increase the boiling point of water and decrease the freezing point of water. When methyl alcohol is added to water, boiling point of the water decreases. The addition of salt to pure water increases the boiling point of water and decreases the freezing point of water. I think ये दोनों increase कर देते हैं. Now, when methyl alcohol is added to the boiling point of water, I have no idea. तो ये रहने दो. क्या करते हैं ये भी देख लो एक बार जल्दी से. डी अरे मार्क कर लेते, बस येलो मार्क कर रहे. उसके बाद नेक्स्ट में याद वाला पढ़ेंगे. Crystallization is the process of deriving crystals of pure substance from their solution. Process of deriving crystals of the pure substance for the solution. A bonding between constant atoms or molecules take place during crystallization. An example of chemical change. Crystallization is example of physical change. तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट यहाँ पे. It's not chemical change, it's physical change.
Okay, that involves the formation of solid. Okay, आंसर क्या है? B करेक्ट होगा 1 and 2 because crystallization is a chemical change, not physical change. Sorry, it's a physical change, not chemical change. ठीक है. Next one is emulsion. Okay, next is air is a mixture. Okay, I'm on mute. What physical process is release of molecular oxygen from leaves? So this is transpiration. Option number B होगा diffusion. Transpiration फिर क्या? The release of molecular oxygen from the leaves. Transpiration is like transportation, मतलब water. But the physical process release of molecular oxygen के लिए हो जाता है diffusion. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Rating the odd one: ripening of fruit, setting of cement, burning of coal. Ripening of fruit क्या है? केमिकल है, फिजिकल है. केमिकल. बर्निंग ऑफ कोल, सेटिंग ऑफ सीमेंट भी है. डिटेक्ट द odd one. Ripening of fruit. कोई नहीं है. ऑल ऑफ द गिवन आर केमिकल चेंजेस, तो ये कोई नहीं है. मेरे दिमाग में ये बात आई थी, बट which of the following is not characteristic of a chemical change? Irreversible है, new substances form है, no net change in energy is involved. This is false statement. C होगा इसका. Involves absorption of energy. Yes, true. तो आंसर होगा C. Correct, correct, correct. The process in which atmospheric carbon dioxide is converted into carbohydrate. Carbon dioxide is converted into, देखो H2O ऑक्सीजन में वो ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन हो जाए. So answer should be B, but देखते हैं. Okay. Next, which of the following pair will give displacement reaction? AgNO3. NaCl तो नहीं होगा. Yeah. The process in which oxidation number decreases as the oxidation number decreases. Redox reaction या reduction होगा. Oxidation number decrease हो रहा है ना, तो reduction ठीक. In one of the following option, materials are arranged in increasing order of the force of attraction between their particles. In one of the following option, materials are arranged in increasing order force of attraction between the particles. Okay, hydrogen, water. Increasing order ना, attraction between ठीक है.
तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ओके करेक्ट। Any of the following medicine production, ethyl alcohol can be used. Ethyl alcohol can be used in antiseptics, hand sanitizers वगैरह में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ओके, whether the following is not characteristic of a solid, ये तो ठीक है, ability to flow easily, नहीं ये नहीं होगा, फिक्स साइज है, ठीक, तो नॉट है तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट is the following are exothermic process in evaporation of exothermic is heat release, होगा ना उसमें। evaporation of water में heat रिलीज नहीं होता, उसमें हीट यूज़ होता है। डाइल्यूशन ऑफ ये हो जाएगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड में हीट रिलीज होता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन ये भी होगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में 2 3 तो होगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में हीट रिलीज होता है, अब्सॉर्ब होता है, यस। सो द आंसर शुड बी बी, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो सब्लिमेशन में क्या होता है, वो इंडोथर्मिक है, इट्स नॉट एक्सोथर्मिक। इवेपोरेशन तो है, बट सब्लिमेशन एक बार कंफर्म कर लो। Okay, which of the following represent the suitable condition of liquefaction of gases? इसके लिए आपको चाहिए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लो प्रेशर, हाँ ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लो टेम्परेचर उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। और लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए। For the liquefaction of gases, the appropriate condition is low temperature and high pressure. This is because under condition of high pressure and low temperature, the molecules of gases comes closer. So अगर high pressure है, हाँ देखो, comes closer, देखो गैस है, गैस में क्या है कि ज़्यादा मोलिकुलर स्पेस है। अगर लिक्विड है बनना है, बिकॉज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज है ना, लिक्विफैक्शन ऑफ सॉलिड नहीं है यहाँ पे। अगर सॉलिड होता तब हाई टेम्परेचर बोल सकते थे, लेकिन अगर गैसेस हो तो मॉलिक्यूल्स को पास लाना है एक तरीके से, तो पास लाने के लिए हाई प्रेशर चाहिए। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिर दूर हो जाएगा, तो इसलिए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, pretty little baby. Which of the following are constraints of a soda acid fire extinguisher? फायर एक्सटिंग्विशर उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जैसे फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट गैसेस, मेटलोइड्स, मेटलोइड्स होता है, सो आंसर इज सी। ई ई एक मिनट, गैसेस भी तो एलिमेंट्स है ना, ज़रूरी नहीं कि कुछ आंसर होना जरूरी। Who is the father of modern chemistry? Lavoisier. So answer is C.
Blue vitriol is chemically. Blue vitriol is copper sulfate, nickel sulfate, iron sulfate. See the above explanation. Blue vitriol is what? याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा. So this is C, copper sulfate. Okay. Which of the following is known as correctly? हाँ ठीक है, ये होगा CEO. CEO. गला अभी भी इतना खराब है कि खांसने के लिए मेरे को म्यूट करना पड़ रहा है. Lime water is turned milky by carbon dioxide. Which of the following is the main ingredients of cement? तो ये हो जाएगा सिलिका क्ले. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. लाइमस्टोन एंड सिलिका क्ले तो दोनों मिला के ई हो जाएगा आंसर इसका. ठीक है. In car battery, electrolyte substance used is sulfuric acid. Sulfuric acid is the answer. Okay. The acid used in car battery is sulfuric acid. Repeat कर दिया ये. Okay, next is the smoke emanating from ammonium chloride powder used for cleaning hot utensils while galvanizing brass utensils. Is ammonia and hydrochloric acid. Okay. Gold is dissolved in mixture of sulfuric and nitric acid, which is called aqua regia. ठीक है, तो ये हो जाएगा सी आंसर. H2 3H2 ratio. The name of the equation was coined by ये ज़रूरी नहीं है. What is the bond order of CO? Who is there? There is a candle, a lamp. यार मेरा गा क्या हो गया. There's a candle, a lamp. Which one you match first? Depends upon location क्या है. If it is मंदिर then I will वो दिया का, नहीं तो candle. What is the bond order of CO groups? अगर फिर ये कोई क्विज वाला क्वेश्चन है या वो तो नहीं पता, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन लिटरल सेंस में आ जाता है. What is the
Bond order of CO. Bond order of CO. अच्छा, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो भी तो वो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तभी तो बताएंगे वो। What is uranium made of? Made of? What is uranium made of? क्या? Uranium made of spoon, medicine, electricity, money. Is used in nuclear reactor as a source of nuclear energy for the generation of electricity. क्या क्वेश्चन है ये? कुछ भी क्वेश्चन देता है। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज। ये मैं गलत ठीक क्यों नहीं हो रहा? Steam methane reforming techniques is used to obtain what now? There's a candle and a lamp. Which one? I knew it. I knew it. ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, रहने दो। दो ऑप्शंस में से तीसरा ऑप्शन आंसर दे दो, ये कोई बात नहीं है। स्टेम methane reforming techniques used to obtain gray hydrogen, brown hydrogen. Stem methane reforming techniques is used to obtain gray hydrogen. ठीक है। Gray hydrogen is widely used in environmentally controversial commodities. Such gray hydrogen produced through the process of steam methane reforming. In this case, natural gas primarily composed of methane reacts with high temperature stem to produce hydrogen and carbon dioxide. While this process is cost effective, देखो ऑप्शन दो थे तो matchstick was not an option. Is a widely used It's widely used as a converter. Such gray hydrogen is produced through a process of the compound which on dissolution in water makes it hard. Hard water. Sodium carbonate. The compound calcium bicarbonate. The hardness of water is due to the presence of bicarbonates, sulfate, and chloride of calcium and magnesium. Washing soda or sodium carbonate is capable of removing both temporary and permanent hardness. ठीक है। ट्रेन की आवाज़ आ रही है इसलिए म्यूट करना पड़ रहा है। The trade name of alkaline lead carbonate is trade name of basic lead carbonate is white lead. Its chemical formula is this. Which of the following substances will show Tyndall effect? Dilute solution of NaCl. Tyndall effect is a scattering of light by
particles in collide or a very fine suspension. It is also known as general scattering. Both milk and starch solution of colloids, thus they will show. So answer is both milk and starch. Scattering of particles with very suspension. Okay. Milk and starch. So answer is C. D मतलब more than one of them. Which of the following oxides is soluble in water? Oxides calcium oxide is soluble in water. Zinc नहीं है, ferrous नहीं है. Here's one of hydrogens. Bubby! Bubby! So running has highest melting point. Sorry. Here's the highest melting point. So this is boron, silicon, aluminum. Boron has highest melting. Zirconia, which we बनाना पड़ेगा. ठीक है. More gases used in welding. क्या है क्वेश्चन? The chemical formula of fire is Al3O2 होगा. The answer is B. Gases used in welding are acetylene and oxygen. So answer is C. Okay. Galvanized iron pipes have a coating of zinc. ये हो गया. उसके बाद next, which one of the following is non-ferrous metallic mineral? ये है, ये नहीं है. Non-ferrous. Lack iron content such cobalt, tin, copper, zinc, etc. So tin and cobalt are not non-ferrous. All the mineral contain iron are ferrous, such as manganese, nickel, chromium. Oh my god. ये मेरा दीवाना मोहब्बत का सुरंग.
which what is the glass used in tube lights and test tubes made up of? So it is silica. Answer is A E. ये हो गया गलत. So it is E. Calcium carbonate क्या क्या होगा? Glass used in tube lights and test tube is which is silicates, which is made of silica, cerium oxide and sodium. Sodium भी होगा इसमें. Which of the following metals are the highest? Silver, copper. Silver होगा. देखिए silver, copper, aluminium. So the answer is silver. The heaviest metal among the following is. हेवीएस्ट मेटल कौन है? प्लैटिनम है इसमें से. और प्लैटिनम और यूरेनियम में कौन सा है? यूरेनियम इज द हेवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट. तो ये हो जाएगा प्लैटिनम. Uranium is the heaviest. To protect broken bones, plaster of Paris scissors, it is a calcium oxide. Plaster of Paris is calcium sulfate. जो जिप्सम कहलाता है ना, जिप्सम हम जिप्सम. Okay, the formula of plaster of Paris is Ca. Half H2 need 2H2. Plaster of Paris ना made by ऐसे. अच्छा ठीक है. Plaster of Paris is half H2 and 2H2 क्या है फिर? जिप्सम है. Fascinating. Used mainly जिप्सम में 2 हो जाएगा. This is the most reactive metal. Potassium, sodium, calcium, iron. Potassium, sodium, calcium, iron. The potassium most rare. Which of the following is also known as white metal? White metal? No idea. Basically, white metal is an alloy of lead and lithium or other metals such as cadmium, bismuth, and zinc, platinum. Okay. White metal is an alloy of lead and lithium. और इसमें और भी मेटल्स होते हैं, तो मेनली लीड एंड लिथियम. मेरे घर एक चोर. minerals are inorganic substances. ठीक है. Which of the following seed is used in production of
engineered diamonds. ग्रेफाइट ग्रेफाइट से तो बनेगा. Okay. Novel metals are found in pure form in nature. True. Uranium and lead are example of novel metals. नहीं. तो आंसर ए हो जाएगा. ए इज द आंसर. हाँ ए है. चलो गलत हो गया. ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों हो रहा है? अभी ठीक है. क्या हो रहा है ये? लाइट की वजह से हो रहा है. अभी ठीक है. Sodium metal is used liquid at ordinary temperature. Normal metals are found in nature in pure and this is the falling metals is liquid at ordinary temperature. थोड़ा फास्ट करूँगा. रेडियम obtained from which mineral? रेडियम was obtained from. नहीं पता तो क्या करें. After being exposed to air for a while, a layer of green basic carbonate forms. After being exposed to air, a layer of green basic carbonate forms on a metal, copper. Iron is obtained from which of the following minerals? Hematite. ठीक है. What is untrue for bleaching powder? Okay. Bleaching powder. Bleaching powder is more soluble in water. It is a powder of light yellow color. It is an oxidant. It is more soluble in water. It is untrue, no? Light chloride is an oxidant. It releases chlorine. Logical process in which a metal is obtained in a fuse. The metallurgical process in which metal is obtained in a fuse. That is called
the method of electrocasting on vessel with zinc. The vessel is made positive vessel. What happens with the weight of it when it rests? Increase when it rests. when weight increase and then decrease, तो ये हो जाएगा C होगा इसका आंसर E increase and decrease पहले decrease then increase. Answer is E. When oxidized, C and E both decrease for long time, increase then decrease. पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा तब बढ़ेगा कैसे, क्योंकि रस्टिंग तो ख़त्म कर चुका होगा ना उसको, तो इंक्रीज देन डिक्रीज. And see, okay. Oh my god, क्या हो गया ये? मैंने तेरे लिए सात रंग के तूने चुने सपने जाने. तू ही मेरी सब है, सुना है तू ही गम है मेरा. खुल जा सिम नहीं से वो ऐसे कैसे शहीद नहीं हुआ, दोबारा करना पड़ेगा. Very nice, very nice. क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ मैं इसका. क्या हो रहा है? मेरी नजर पे क्या हो गया ये, पता नहीं क्या हो गया. प्ले स्टोर ही नहीं ओपन हो रहा. अजीब चीज़ें हो जाती हैं बीच में. क्यों नहीं ओपन हो रहा? अजीब बात है.
मेरा सारा एडिट भी गायब हो गया। क्या यार, अजीब। Oh my god. क्या, क्यों ऐसे बता। दोबारा भी हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। छोड़ो यार, केमिस्ट्री याद कर लेते हैं। देखो भी इजी रहेगा। क्या इजी रहेगा यार। हाँ दे प्लीज कुछ करिए। लाइव मिस्टेक है, ठीक है, तो जहाँ तक था वहाँ तक करो, तो कल लाइव मिस्टेक पढ़ने से तो ज़्यादा इजी होगा ना, ठीक है। नहीं में पूरा नहीं है ना, सब नहीं है। 2 घंटे का मैंने तो बहुत मेरा। कुछ तो इशू है इसके साथ। नहीं दिख रहा ना इतना डिटेल। जो भी एडिट कर रहे हो वो स्क्रीनशॉट कर ही लो। रूल नंबर 1। सब कुछ वेस्ट हो जाए।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह की कितने पेज 30 पेज है ना चलो फास्ट फास्ट करो ये से स्टार्ट detergent used for cleaning clothes are detergent used for cleaning clothes are carbonates, bicarbonates, sulfonates, bismuth. So, sulfonates a family of compound that are similar to soap but are more solid. और हर पेज के बाद ना रिवाइज कर लो चलो वाला ताकि दोबारा याद करना नहीं है detergent used for cleaning clothes are this is sulfonates ठीक है सल्फोनेट्स हो गया यहाँ पे हटा दो और ठीक है इसके बाद क्या है एक बार टाइमर भी लगा लो क्या कहूँ कि शर्म से लब सिले हुए देखा एक ख्वाब तो हौसले हुए आज रीडिंग कंप्लीट करेंगे ओके तो ये हो जाएगा सल्फोनेट्स सोप रिमूव्स क्रीज by emulsification. The emulsification is the process where soap removes grease. Yeah, रखो तो अभी नहीं. Emulsification is the process many to ever impossible. Typically, these are long chain of compounds containing polar or ठीक है. So this is emulsification. ये हो गया. ये तो पता था. What is detergent? Detergent is a refined detergent soap. आंसर क्या है इसका जल्दी कर भैया रिफाइनिंग एजेंट ठीक है different types of detergents are surfactant or a mixture of surfactant. Detergent is surfactant, a mixture of surfactant with cleaning and refining properties in dilute solution. The most common detergent chemical surfactant. The term detergent is specifically laundry and all. ठीक है which of the following is used in manufacture of soap तो ये हो जाएगा vegetable oil ठीक है इसके बाद क्या permanent harness of water is due to अच्छा ये छूट रहा है ना यहाँ तक पहुँच गया तुम्हें नहीं नहीं Magnesium. However, it is slightly dark and not some drinking. It is very difficult to wash clothes with hard hardware for box the xylem tissue and thus not हार्ड वाटर को हटाने वाला भी कुछ होता है वो भी चीज़ यहाँ पे आ रही थी तो ये हो गया तो चलो फॉलोइंग ये तो हो गया so the element present in urea CHO NO ठीक है यूरिया का फॉर्मूला देख लो तो CONH4 CONH2 कट ठीक है the urea molecule has two apparent groups containing so the formula पर लो यूरिया को कार्बामाइड भी बोलते हैं ऑर्गेनिक उसको H2 इम्बाइड उसको बोलते हैं इम्बाइड पेट्रोल फॉर्मूला क्या है NH2 ठीक है बस इम्बाइड हो गया इसके बाद
It wasn't उसके बाद inactive inactive computer to know mosquito कर ही तो बात होती डिटेल्स नहीं एक और कुछ था याद नहीं आ रहा inactive computer remove mosquito as A3 L3 so ये हो जाएगा match without green mixture of the process of synthesizing. Okay. Okay, so it is 6 p.m. We are taking break for like 10 minutes. 6 बज गए हैं and we are taking break for like 5 minutes. 5 नहीं 10 minutes और we will continue from 6:10. Okay. क्या कहूँ कि शर्म से देखा एक घर तुमने सिलसिले हुए दूर तक नहीं minutes timer. Okay, so I'll be back after 8 minutes or नॉट 8 मिनट्स एक्चुअली मेरे को पानी लेने जाना है और मम्मी से मिलने जाना है मतलब मेरी मम्मी अभी ऑफिस से आई है तो मेरे को मिलने जाना है मम्मी से तो ठीक है आते हैं फिर थोड़ी देर में
hi. Hello. No, not coffee. Pani, pani, pani. We live on water. हाँ. पानी है पानी. Okay, so 3 minutes. Still, we have 3 minutes for a break. No, it's 4 minutes actually. Why you want drink milk? I do, but बस morning में. Yes. देखो ये मेरा सेल्फ मेड ब्रेक टाइम ये फट गया है. अरे मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं बच रहा कुछ करने का. टोटल मस. वेट, ये तो चल ही नहीं रहा. Let's become friends. Here I'm planning a YouTube family and you're talking about friends? भाई पता है क्या हुआ? अभी 2 घंटे से जो पीडीएफ पढ़ रही थी वो सारे एडिट्स गायब हो गए. और मेरा मन इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा ना अभी. अभी जितने हुए थे सब सारा वो चला गया. ओह ग्रेट. हाँ यार पूरा हाईलाइट चला गया मेरा. बताओ अब इतना दिमाग खराब हो रहा है दोबारा फिर से कैसे यार. 2 घंटे का था. कोई फायदा नहीं हुआ. पता नहीं बार बार क्या होता है. या तो ड्राइव अपडेट नहीं होता है, सिंक नहीं हो पाता. कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है बार बार. मेरे 2 घंटे की मेहनत शाक. मेरा मन कर रोने का. अगर ये लाइव नहीं होता तो अभी मेरा रोने वाला सेशन चल रहा होता. बट क्या कर सकते हैं. You meet my big. You are in graduation ना. You are doing BSc. नहीं पता. थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया. Okay, big sis as the best part who guide me and edited was great. Usually I edited a lot of people. Masters MSc. So you are in masters. I have done my masters. मेरा मास्टर्स 2023 में हो गया.
Okay. So I'm senior. I completed my master's in 2023. You were doing your using. Okay, let's start our session again. भाई मेरा सारा एडिट्स गायब हो गया। बहुत गुस्सा आ रहा। मेरा सच में रोने का मन कर रहा है। पता है इतनी देर से एडिट सारा हो रहा था, सब चला गया। हाँ, वॉट लेट्स स्टार्ट। मेरा तो मन रोने जैसा हो रहा है सच में। मैं तो कहाँ तक ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था ये पीडीएफ। क्या कुछ नहीं कर सकते। If you are moving from hell, then keep moving is the only motivation left. तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते अब, तो कंटिन्यू ही कर लेते हैं। Try to recap. No matter what the situation. ये कॉल की बात नहीं है, एक्चुअली आई वॉज हाईलाइटिंग दिस फॉर फर्दर रिविजन्स, और वो वही चला गया। हर बार पूरा पीडीएफ तो नहीं करना है ना, हर बार लाइक आपको शॉर्ट करते जाना है अपने नोट्स को, तो दैट्स व्हाई आई वाज हाईलाइटिंग दिस, और वही उड़ गया मेरा। 2 घंटे की मेहनत ख़त्म हो गई मेरी। एनीवेज, कंटिन्यू। The term green chemistry refers to the process of green chemistry is a chemical engineering and chemistry approach that aim to reduce or eliminate the use of hazardous substances in the creation of chemical products and processes. Green chemistry is also known as sustainable chemistry or circular chemistry. It is a process that reduces the negative impact of chemical process on human health and the environment by designing chemical products and processes to reduce or eliminate the use of hazardous. ठीक है, the term green chemistry is green chemistry is a process of synthesizing chemical compounds by minimizing study time now for me sleeping time. Okay, इतनी जल्दी कौन सोता है, मतलब सोना चाहिए बट आई डोंट नो। ओके देन, गुड नाइट। हाय अभिजीत, हेलो। तुम ब्रेक टाइम ख़त्म होने के बाद आए हो? हाँ, ब्रेक टाइम is next break time will be 7 p.m. But it's okay, you can stay. हाँ हाँ, go and sleep. Have a good sleep. Bye bye.
सुबह का टास्क कंप्लीट हुआ, हाँ सुबह का टास्क कंप्लीट हुआ लास्टली, पता है 4 घंटे हो गए। 3 घंटे का डील था और 4 घंटे हो गए, लास्टली कंप्लीट हुआ। और अभी का टास्क खराब हो गया, जितने हाइलाइट्स कर रही थी ना वो सारे उड़ गए मेरे। टास्क मतलब मेरा टारगेट था, एंड ये अभिजीत भी पढ़ाई कर रहा था मेरे साथ, तो हम दोनों का ऐसे टारगेट था कि 3 घंटे तक करना है। लेकिन मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो फिर मेरे को एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना पड़ा, तो 4 घंटे हो गए हमारे। एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव। ओके अभिजीत, अभी ना प्लीज़ तुम एक बार 7 बजे आ जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं हुई है और मेरा पीडीएफ भी ख़राब हो गया है, तो मेरा ऐसे ही दिमाग है कि अभी कंप्लीट करना है। ओके, प्लीज़ 7 बजे आ जाना, फिर बातें करते हैं। ओके, 7 to 7:10 मेरा ब्रेक रहेगा, 10 मिनट, ठीक है, फिर बातें करते हैं। ओके, बाय बाय। एंजोरो, अभिजीत नाम है उसका, अभिजीत नहीं। एंड वो भी मेरा छोटा भाई है। चलो ठीक है, बाय बाय। आना 7 बजे, हाँ। An active chemical to remove mosquito is an active chemical to remove mosquito is Elethrine. Khatha the green chemistry refers to more than a process in the chemical compounds for minimizing the use of hazardous chemicals, innovative scientific solution to real world environmental problem, the process that reduces the negative impact of the chemical process. So green chemistry is the process मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ, जो भी हजारडस केमिकल है उनके यूज़ को मिनिमाइज़ करना है, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है केमिकल्स के उसको रिड्यूस करना है। तो यही है ग्रीन केमिस्ट्री। ओके, सो ग्रीन केमिस्ट्री रिड्यूस एलिमेंट हजारडस सब्सटेंस, सस्टेनेबल केमिस्ट्री है, और ये एलिमिनेट द यूज़ ऑफ हजार्डस। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। एब्सोल्यूट अल्कोहल बहुत बुरा हुआ यार, मेरे एडिट्स खत्म हो गए। फॉर्मूला फॉर्मूला C2H5OH। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ most useful classification of medication in medical chemistry? So this is based on the chemical structure of the drug. Option number C, molecular targets. Oh my god. Classified based on the chemical structure of the drug, medicinal effect, and the drug solubility, and molecular targets. Molecular targets, ठीक है। Okay. Food cans are coated with tin and not with zinc because tin react हो जाएगा ना, more reactive है एक तरीके से zinc, because zinc is more reactive. Okay, हाँ zinc is more reactive than tin ना, तो इसलिए tin में रखते हैं। Okay. Next. The cans in which food is packed are coated with tin and not with zinc, ये repeated है। उसके बाद क्या है? An example of antibiotic medicine is penicillin.
एंटीबायोटिक है मेरे नोट्स में है मेरे, तो एस्पिरिन हो गया. पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक. एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल आर एंटीपायरेटिक एंड क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू एंटी मलेरियल. ठीक है, तो ये डॉक्स में मिल जाएगा. सो वी कैन जस्ट नोट. ठीक है. मैथ्स लिस्ट वन विथ लिस्ट. स्किन कैंसर, ultraviolet light, noise pollution, decibel, global warming, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन होल्डर्स, कार्बन डाइऑक्साइड. नहीं 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 नहीं, ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा. सो ए का 2 होगा, बी का 3 हो जाएगा. 2 3 4 1. 2 3 4 1 यानी बी आंसर होगा. ओके. न्यूज़. Best of all, I hope I'll try. Oh, such. A good little. Oh my god, so sweet. Oh, such a sweet message. An active chemical to remove mosquito is. An active chemical to remove mosquito is एलिथेरिन. ठीक है, चलो. इतने क्यूट लोग. हाँ, ये हो गया डिटर्जेंट्स वाला. अच्छा, मिसलेनियस वाला. So cute. The best of all. Breathing air polluted with the carbon monoxide is dangerous because breathing air polluted with carbon monoxide is dangerous because carbon monoxide is dangerous. Polluted with carbon monoxide is dangerous because CO combines with oxygen in it. Hemoglobin CO removes water from the body and causes dehydration. CO combines with hemoglobin. So cute. Cute, yeah. CO combine. ठीक है, ये हो गए combines hemoglobin. ठीक है. Next is really, which the following is a major cause of air pollution. Which of the following is major cause of air pollution? तो ये हो जाएगा disposal burning of fossil fuels. Oh my god. Hi Zero. Cute. If the flame slows down there, burning of fossil fuels है तो यहाँ पे
Okay, next. So कोई falling banning of fossil fuels हो गया. इसके बाद बचा the falling slows down the reaction rate. The homogeneous catalytic promoter तो बढ़ाएगा ना, तो I think homogeneous catalyst. Then अगर okay, अगर catalyst है तो बढ़ाएंगे. The all catalysts affect the rate of catalyst accelerate chemical reaction. The rate of any chemical reaction um, catalyst accelerate the rate of chemical reaction. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्या है? Lightweight bulletproof helmets and jackets use the following fibers for their protection. Lightweight bulletproof helmets and jackets use which of the following? Feels unit. So cute. Lightweight bulletproof helmets and jacket use which of the following fibers for their protection? So it's Kevlar fiber. Okay. Such cute humans are there. Kevlar fiber. Okay, is used for the construction of lightweight bulletproof helmets and covering. Kevlar is a strong heat resistant. Okay, so the following is the first artificially prepared element. Technetium. Technetium is the first artificially prepared element. Great. So the following is not a guide. So nitrogen is mixed of two substances in which the fine particles of one substance are disposed in other substances. Disposed in the other substance is called colloid. It means example smoke, fog, saving cream. अच्छा सेविंग क्रीम भी स्मोक तो होगा विनेगर नहीं होगा सो आंसर इज बी कल रात आया हूँ मेरे घर एक चोर आपके है बोला मेरा घर बिजली okay. The higher the standard standard electric potential of the three metals A, B, and C are respectively 0.5 V minus 3 V and here potential of three metals. Reducing power of these metals would be oxidizing B, C, A. No idea. What is this question? पहले तो ये लगा लो फिर नोट्स कर लेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन is the following present in maximum amount in acid rain तो मैक्सिमम सल्फरिक एंड नाइट्रिक होता है एसिड रेन की बात कर रही है सल्फर डाइऑक्साइड and nitric oxide are emitted. Sulfur and nitric acid respectively, oxygen and cloud water. This is called acid rain. कल रात आए हम
मेरे घर कुछ react with oxygen and groundwater on the earth, sulfuric acid respectively. ठीक है. उसके बाद this is called acid rain. The amount of so H2SO4 हो गया. Sorry. Cute little caused by um, the main cause of acid rain is the main cause of acid rain is rain caused by emission of sulfur dioxide and nitrous oxide. These pollutants are emitted from the factories from petrol burning water, therefore more than 1% of the current. ठीक है. तो फैक्ट्रीज हो गए, पेट्रोल हो गया, सबसे हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन H2SO4 एंड ये दोनों हो जाए. तो ये ऊपर कर दो. प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिसॉल्व constituents of a mixture by their absorption on a appropriate material is called chromatography. Or separating different dissolved constituent of mixture by their absorption on appropriate material is chromatography. ठीक है. तेरे होके रहेंगे ला 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 ला. Used for separation of dissolved constituent by absorbing them over the X-rays is unknown. Xenon, infrared, unknown. Okay. उसके बाद क्या है? Which gas contributes to the global warming due to the greenhouse effect? Global warming due to its greenhouse effect. And this is which gas contributes to global warming due to its greenhouse effect? Nitrous oxide, carbon dioxide तो है ही, methane में more than one of the above. D. D is the which of the following is not an electrophile? ठीक है. Electrophile क्या होता है? Electrophile is electron loving because it's after it is complete. The neutron nucleus loving Na plus. ये अजीब से वर्जन है, पता नहीं क्या होगा. No idea, sir जी. Substances that readily absorb moisture from other substances without chemically reacting with them are called. देखो प्रीवियस क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अच्छे से याद करना है. उसके बाद इससे रिलेटेड नोट्स भी बनाने ही होंगे. तो आई एम डूइंग दैट. नहीं कर सकते इग्नोर. आई नो ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे यूट्यूब में, बट स्टिल वी कैन नॉट इग्नोर इट. नहीं, इतना इग्नोर करके तो नहीं जा सकते. ओके. substances that readily absorb moisture from other substances without chemically reacting with them are called. Absorb moisture from other substances without chemically reacting with them are called desiccating agents. भाई क्वेश्चंस तो अच्छे खासे हैं.
Now next is Grey Revolution is related to fertilizers. फिशरीज का तो ब्लू हो जाएगा, ऑयल से येलो. फर्टिलाइजर्स ब्लू, येलो हो जाएगा ऑयल से. एंड राउंड रिवोल्यूशन टू रिलेटेड टू पोटैटो, ये भी है. राउंड रिवोल्यूशन. फैराडे कांस्टेंट क्या है? रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पर मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. Magnitude of electric charge per mole of the electron. It is denoted by F and is named. It is a universal constant and value is this. Depends upon is a universal constant and represents the magnitude of electric charge per mole of electron. Represents the magnitude of electric charge per mole of electron. ठीक है. Next क्या है? Which are the following? And cryolite are important ores. ये तो पढ़ा था. एल्युमिनियम, मेटल. ठीक है. So bauxite and this are the other major ores of aluminium. ठीक है. वैसे तो फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो यूरेनियम तो है, रेडियम भी है, थोरियम में. कैडमियम नहीं है. कैडमियम इज फाउंड इन नेचर in mineral form. Cadmium rod are used in nuclear reactor to slow down the speed of cadmium rod are used in nuclear reactor to slow down the speed of neutrons. Okay. कल रात आया मेरे घर भैया. जल्दी जल्दी करो बाबू, जल्दी जल्दी करो. These are the following the best fire extinguisher. Carbon dioxide. Catalyst used in hydrogenation of vegetable oil into vanaspati ghee is. Catalyst used in hydrogenation of vegetable oil into vanaspati ghee is nickel. Catalyst is used to convert vegetable oil into vanaspati ghee. Nickel. Bhai sahab. Then the scientist who stated that matter can be converted into energy. Who stated that the matter can be converted into energy is Einstein. It's got MC square. So matter can be converted into energy. Einstein के गए. So ये तलो. Okay. Next. The breathe test conducted by police to check drunken driver has
Which one of the following on filter paper? So this is potassium dichromate sulfuric acid. So answer should be A, but let's check. Okay, correct. Potassium dichromate sulfuric acid. कितना टाइम हो गया यार? 6:41. ओके, ये भी हो गया. ये हो गया. नेक्स्ट क्या है? द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. तो ये इजी है. वी कैन जस्ट हाईलाइट बस कर दो. बहुत है. C6H12O6. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नाउ द मोस्ट पॉपुलर एंड सेफ शुगर ऑप्शन इज aspartame. Sorry. अरे यार. Nowadays the most popular and safe sugar option is aspartame. No idea. Glucose is converted to ethyl alcohol by enzyme. Gymase. Gymase is the enzyme. Sorry. Glucose is converted to ethyl alcohol by enzyme. Gymase. Gymase, okay. Gymase catalyze. Oh shit. Catalyzes the fermentation of sugar into ethanol and carbon dioxide. This हाँ ठीक है. ये हो गया. Final product of fermentation is नहीं पता. See ethyl alcohol. Okay. Fermentation is ethyl alcohol. उसके बाद after the breakdown of carbohydrates, what is the final product? After the breakdown of carbohydrates, what is the final product? Glucose, of course. The gas mainly used in cooking is methane gas. Is mainly used. It is obtained from the dung. And the methane gas is used for cooking. ठीक है. इसके बाद देखो next. Which one of the following substances is used in preservation? Okay, so preservation of foodstuffs. So it's sodium benzoate. सोडियम बेंजोएट हो गया ये. इसके बाद क्या है? The artificial sweetener containing chlorine that has the appearance and taste as that of the sugar and remains stable at cooking temperature is artificial sweetener. Sucralose.
भाई इतने स्ट्रेंज नेम्स. ओके. अरे यार. ट्री ग्लिसराइड. व्हाट इज ट्री ग्लिसराइड? सो ये तो है कि फैट्स है ना, शायद फैट्स ही है ये. ग्लिसर है, हाँ ठीक है. ओके. टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड ना. तो ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है इसमें. सी बी है मतलब. ठीक है ठीक है ठीक है. नेक्स्ट क्या है? आयोडाइज सॉल्ट कंटेंट पोटेशियम आयोडाइड. ओह, आई नीड टू म्यूट दिस. पोटेशियम आयोडाइड, सॉल्ट कंटेंट पोटेशियम आयोडाइड. तो ये हो जाएगा सही जवाब. पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है 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 ठीक है. The gas used in the manufacture of Vanaspati ghee. Hydrogen gas. Stay a little longer with me. अच्छा, इसमें भी टिक लगा सकते हैं ना. हाँ, कि स्क्रीन शॉट ले. ठीक, इसे मैं लगा ली. ये तो ले चुके भैया. क्या ना. Stay a little longer with me. मांगा जो मेरा है जाता के तेरा है. मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली. कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू. रब्बा जो तेरी तेरी सी भी ना चली. Which of the following has an octane number of 0? Octane number of 0. No idea. An octane has. मांगा जो मेरा है ज्यादा के तेरा है. मैंने कौन सी. None of the given option has an octane number of 0. अच्छा. Octane has octane number of 100. An octane has octane number of -10. An octane has octane number of n. Heptane has octane number of 0.
The major component of CNG. The major component of CNG क्या है? CNG is CH4. The type of oil is typically used in automatic cars. तो ये हो जाएगा petrol. Petrol is commonly used in self-driving cars, gasoline or petrol. Liquid mixture obtained derived from petroleum. Petrol is also used as a biological solvent. So the answer is petrol. Select the incorrect statement out of the following. Cotton is suitable for use as clothing in summer because it absorbs moisture. Cotton is suitable for use as clothing in summer because it absorbs moisture. Polycarbonate is used to make acrylic is also used to called artificial and it's used for Teflon is used for coating non-consumer. C is not correct because acrylic is called artificial or is commonly called synthetic silk. Or artificial wool. Okay, so ये सी आपका गलत हो जाएगा. बख्शा गुनाहों को सुनने दुआओं को. The quantity of petrol is expressed by. ठीक है इसे स्टार्ट करो. और what was the sustainable material used in bombs dropped at Nagasaki? ठीक है. Hiroshima is fat man. Nagasaki is fat man is a fat man जो है वो नाग ऐसे लगाया है तो Nagasaki is fat man. और कोड नेम नागासाकी. डेट कितना है 9 अगस्त 1945. Plutonium was used as fissile material in the bomb. On the other hand, Little Boy was Hiroshima पे वो अगस्त 6 ये 1945. ठीक है. इसमें यूरेनियम यूज हुआ था. ठीक है. Some of the following would cause the bright red color due to bursting of crackers. Some of the following would cause the bright red color due to bursting of crackers. Strontium salts.
Stones and salts. The stones penetrate calcium carbonate and red color appears when the crackers explodes. ठीक है, तो ये हो गया भाई. ठीक है, the explosive nitroglycerin is a the explosive nitroglycerin is an ester which is used as an explosive as an ester which is used as an explosive. Used as explosive. Next क्या है? The device which converts chemical energy from fuels to dealing with electrical energy. Fuel cell is a device that generates electricity through fuel cell is a device that generates electricity through an electrochemical reaction, not combustion. In a fuel cell, hydrogen and oxygen through an electrochemical energy that generate electricity through an electrochemical reaction. Fuels hydrogen oxide presents with electricity through an electrochemical reaction, not combustion. सीधे यार फ्यूल सेल है बस, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. Whether the following is the major constituent of the liquefied petroleum gas. So LPG का तो वही हो जाएगा कि ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होगा उसका ना, और ब्यूटेन, प्रोपेन 35%, ब्यूटेन ज़्यादा. So it will answer is okay. The main component 7 बज गए. The main component of liquefied petroleum is butane. ब्यूटेन ज़्यादा अमाउंट में है और प्रोपेन. मतलब इस ट्रेन की टाइमिंग 7 बजे है. ओके, अब ट्रेन की टाइमिंग मैच करेंगे अपने. क्या यार, it may also contain small amounts of other hydrocarbons such as ethane. Oh my god, it's so loud. LPG used as domestic fuels mainly contain butane and propane. चलो ये हो गया. The incomplete burning of petrol and diesel produces in the complete combustion of hydrocarbon fuels. Petrol and hydrocarbon react with the oxygen of water. Produce carbon dioxide is produced. Incomplete combustion occurs. The oxygen is put in the incomplete combustion.
So it's 7 p.m. Ideally, I should take a break, but ये दो question करके I'll take break. Incomplete combustion में I guess D होगा, carbon monoxide. Okay. Incomplete combustion occurs when the supply of air or oxygen in the carbon monoxide and the carbon are produced instead of carbon dioxide. So carbon dioxide is not produced, carbon monoxide is produced. ठीक है, तो ये हो गया इधर. The quality of petrol is expressed by octane number. तो ये octane number हो जाएगा. Okay, so we are taking break again for 10 minutes. भाई हालत ख़राब हो गई है और मेरा गला भी ख़राब हो गया है. मम्मी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 बस 8 में इतना टाइम मत लगाओ. आउच. बस 1 घंटा और, लेकिन 1 घंटे में क्या होगा यार. नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा है. 1 घंटे में नहीं हो पाएगा शिवानी यार. हो गया था लेकिन नहीं होता तो क्या कर सकते हैं. मेरे सुबह तुम्हें और तुम्हें शाम, तुम दर्द हो तुम आराम, मेरी आँखों से तेरे से सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना. रहे जब मेरे बस वही तो मेरी आवाज़ तेरी माशूकी बस तेरी है मुझे नशा में तू नशा बन के खाना है. Stay a little longer. मेरी जान मेरे दिल पर तू रहे तो
Just one last shot. Oh my god. Oh my god. Who is she? Gotcha. Mystery. You come back. This time you'll leave. Cause I'm a nightmare. Just like a day trip. It's gonna be forever. It's gonna be forever. You can do this forever. Hi Abhijit. Hello, hello, hello. और बताओ कैसे रहो और कैसा रहा तुम्हारा दिन आज? दिन में नींद आई? आई होगी पक्का। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी सेशन एंड होगा थोड़ी देर में, मतलब 1 घंटे और है। दिन में नींद आई? भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, मैंने पूरा दिन सोया। अच्छा हाँ मेरे को भी नींद आ गई उसके बाद। एक्चुअली कल कल रात को कोई प्लान था नहीं तो जल्दी सोई नहीं, और फिर लेट हो गया सुबह, मतलब सुबह जल्दी उठ गई, तो 3-4 घंटे की नींद हुई थी रात को, शायद इसी वजह से। ऐप डाउनलोड की, नहीं कर पाई, मतलब ऑलमोस्ट दिन बहुत बहुत ज़्यादा अलग ही रहा। बीच का दिन समझो गायब ही हो गया था आज, तो ये बात है। बट आई एम प्लानिंग कि ठीक है, सुबह तो बहुत अच्छा है टाइम, एक तो जग के पढ़ना भी चाहिए। तो मेरा आज से प्लान है कि जल्दी डिनर करके सो जाना और सुबह जगना, क्योंकि अच्छा तो लगा था, पढ़ने में मज़ा आया था। तो मेरा यही प्लान है कि जल्दी डिनर करके सो जाना और फिर जगना, और हैबिट हो जाएगी शायद, तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि मेरा पहले था ये ऐसा एक्सपीरियंस, लेकिन अब छूट गया ना, तो जो भी यार मज़ा तो आया था, मतलब बहुत मज़ा आया था पढ़ने में। हाँ वो तो है, मैं भी हाँ मतलब प्रोडक्टिव था, ऐसा लग रहा है ना कि बस वो सुबह जो पढ़ाई हुई है उतने से ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन था पूरे दिन, शायद इसी वजह से सो भी गए, मतलब हाथ दिल पे वो रख के कि चलो ठीक है, सेटिस्फाइड था एक तरीके से। तो आई एम प्लानिंग दिस कि डिनर टाइम थोड़ा ये कर लो, क्योंकि रात में कुछ भी करो ना तो थक जाता है शरीर की, वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, तो उससे बेटर है कि सुबह वाला टाइम ही यूज़ कर लो, मतलब ऑप्टिमम वो प्रोडक्टिविटी हो जाए, उसके बाद दिन भर थोड़ा डिले भी हो तो। हाँ हाँ वही बात है, क्योंकि प्रोडक्टिव था ना, लग रहा था कि अरे 4 घंटे हो गए, मतलब आधा काम हो चुका है बस, सबके उठते ही, तो मज़ा तो आया था। सो आई एम थिंकिंग दिस, व्हाट डू यू से? ये करते हैं, मतलब मेरा तो है प्लान कि अभी जैसे 8 बजे तक वो करो, अभी सेशन करो, फिर 8 से 9 मेरा डिनर का प्लान है। उसके बाद बेड पे जाके कोई फ़ोन वोन नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, ट्राई करना है कि सो जाओ, मेडिटेट करो और सो जाओ। हाँ मोबाइल चार्ज करिए, हाँ वही, चार्ज अभी जैसे डिनर के टाइम में ही चार्ज में लगा देंगे, ऐसा कुछ करके करते हैं। बट हाँ मज़ा आया था, तो मेरा प्लान है कि सुबह उठने का। बाकी देखो क्या होता है, क्योंकि ठंड भी आ रही है तो मोटिवेशन कहीं ख़त्म ना हो जाए, लेकिन अभी के लिए है प्लान, देखते हैं क्या होता है। वी कैन एटलीस्ट ट्राई, तो ये चीज़ है।
और तुम भी पढ़ रहे थे साथ में, तो वो भी अच्छा लग रहा था कि चलो, जैसे नहीं होता कि घर में भाई बहन या सब लोग साथ जब पढ़ते हैं, या फिर रूममेट्स जब पढ़ते हैं साथ में हॉस्टल में या कुछ भी ऐसा, तो वो वाला भी फील आ रहा था। तो अच्छा है, मज़ा आया। अब तो ब्रेक नहीं होगा, बट स्टिल आई एम पुटिंग दिस। फीवर सही, हाँ फीवर तो फीवर, अरे वो सर्दी की वजह से थोड़ा बॉडी टेम्परेचर हो जाता है ना, वो वाला फीवर था। मतलब इट वॉज नॉट एक्चुअल फीवर, बस सर्दी की वजह से मेरे को ठंड लग गई थी। गाँव गई थी ना, तो वहाँ ठंड लग गई। गला तो मेरा ख़राब इसलिए क्योंकि मेरे को अभी जैसे काढ़ा पीना चाहिए बना के, या कुछ गले में लगाना चाहिए, बट मेरे ये ध्यान में नहीं रहता है। तो वो तो रहा होता है ना, या काम चल रहा है तो आलस करो, ये वाला हो गया। इसलिए मेरा गला ही ठीक नहीं हो रहा। हाँ, ठंड ज़्यादा होती है, और फिर वहाँ पे मतलब बहुत लोग भी आए थे, तो सोने वगैरह में भी प्रॉब्लम हो गई। फिर सुबह सुबह वापस आना, सब मिला के वो हो गया तबीयत खराब। फिर आने के बाद मेरा कुछ ठंडा सा खा लेना, ये सारा मिला के पूरा हो गया था। खैर चलो, लास्ट है। पर सबसे बुरा लग रहा है ना कि 3 घंटे से 4 घंटे होने वाले पढ़ाई के। नहीं, कितने कितने बजे से यार, 5 बजे से ना, 5 से 8 था। 1 मिनट, हम तो 4 बजे ही आए थे। हाँ, तो 3 घंटे हो गए, 1 घंटे और। तो इतनी देर में ना मेरा वो पीडीएफ एडिट खराब हो गया, वो सबसे बुरा लग रहा है। इतनी देर की मेहनत मेरी बर्बाद हो गई है। 2 घंटे की मेहनत बर्बाद हुई है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। खैर चलो, sour taste of vinegar is due to acidic, tartaric acid, acidic, एसिटिक एसिड होता है ना, एसिडिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट इन sour taste, the concentration of the acetic acid in vinegar is about 5%, the formula is ठीक है। हम्म। एक्चुअली मेरे रूटीन में ना कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कुछ भी सेटल नहीं हो पा रहा है एक तरीके से। 2 महीने से यही हो रहा है, हर हर कुछ दिन पे कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है मेरे लाइफ में, तो कुछ भी सेटल ही नहीं हो पा रहा है। पूरा दिमाग पूरा मेस हो चुका है। सार टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, ये तो हो गया एसिटिक एसिड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? The test consistent with the formula of acetic acid. The acetic acid is produced by fermentation process where ethanol is converted by bacteria. ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या, विनेगर इज सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये तो रिपीटेड है। अच्छा, 8 बजे में, तो ठीक है ठीक है, ओके बाय। 8 बजे सेशन एंड होगा, तो आई विल वेट फॉर यू। 8 8 बजे, ठीक है। लेकिन उसके बाद सेशन एंड हो जाएगा थोड़ी देर, 4 घंटे होंगे, सेशन एंड हो जाएगा। द केमिकल नेम फॉर विनेगर एज, ठीक है यार, ये कितने बार क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेम्बल्स दैट ऑफ, व्हाट इज दिस, विनेगर, ओके। नेक्स्ट which acid is described as, मतलब इस प्रीवियस क्वेश्चन में बस
ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है ऑक्सैलिक एसिड विच ऑफ द एसिड इज C2 क्या है C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड ठीक है। फिर उसके बाद लेमन साइट्रस ड्यू टू सिट्रिक एसिड तो ये पता है। उसके बाद क्या है which of the following gases is used to artificially represent ethylene ठीक है ये भी हटा दो। ओके नेक्स्ट है which of the following technology will be enabled by the 5G mobile communication network, internet of things, edge computing, network slicing तीनों होगा internet of things, edge computing, 5G mobile communication networks। Edge computing is an emerging power which refers to a range of networks and devices at or near the user. Network slicing is a network configuration that allows multiple networks to be created on the top of a common physical infrastructure. Okay. ये क्या हो रहा है ऐसे क्यों हो रहा है लाइट अरे भाई मेरे को इसी में से क्लिप निकालने हैं मत करो ऐसे ओके तो कहते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग में क्या होता है कि मल्टीपल नेटवर्क्स कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। इस कंप्यूटिंग इज इमर्जिंग ठीक है इंटरनेट इज अ कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स communication between devices and cloud as well as between the devices themselves तो डिवाइस में और उसके मेन में ठीक है ये हो गया तो सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अभी तक मेरा पीडीएफ हो चुका होता क्या हुआ आज मेरे साथ ऐसे ओहो पॉलीमर जल्दी करो पॉलीमर क्या है कि भैया जल्दी ओके नहीं natural rubber is a polymer of isoprene polymerization isoprene हाँ ये ठीक है कल रात यहाँ में polymerization is the process of any large number of small molecules the reactants that is the small molecules which are monomer and products of the polymerization polymer the natural is polymer of isoprene is a catalyst typically made by destructive distillation of the petroleum isoprene ठीक है नेक्स्ट ये तो ठीक है पता था मत करो ऐसे ठीक है टेफ्लॉन is a polymer of which are the following monomers तो टेफ्लॉन है मेरे पैर क्यों दर्द हो जा नहीं क्यों हो रहा इसे रखने से हो जा क्या है टेफ्लॉन is a polymer of which of the following monomers तो ये हो जाएगा पॉली फ्लोरो एथिलीन कॉमन और टेफ्लॉन ऐसे पॉलीमर ठीक है तो यहाँ पे वाइट लगा दो एक बार ethylene bakelite is formed by the condensation of phenol and formaldehyde 20% better
Bakelite is formed by condensation of phenol formaldehyde resins. दिस इज स्वीटनर, सो ए का हो जाएगा, ए का 3 होगा, ए का 3 होगा, बी का क्या होगा, बी का 4 होगा, 3 4, सो द आंसर शुड बी सी, ठीक है। Hospital artificial material is antihistamine. Okay, next is what are the 5 were used to make bulletproof jackets? The Kevlar, Kevlar, ठीक है। Whether the following is an example of melamine used for making floor tiles? Thermosetting plastics. Without thermosetting, ठीक है ठीक है ठीक है। Thermosetting plastic, thermosetting plastic, thermosetting plastics. Okay, okay, okay. ये हो गया। हमें high melting explosives क्या है? Octet is an abbreviation of high melting explosive. It is also known as octane and cyclotetramethylene tetramine. It is a colorless solid which is soluble in water. It is a radioactive. ठीक है, तो HMX क्या है? HMX octane is an abbreviation for high melting explosives. Only one, एक ही होगा ना abbreviation, 50 कैसे हो सकता? कॉमन सेंस भी ज़रूरी है कभी कभी। मुझे जगह नहीं जाना, मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक तुम, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू कब जाना। मुझसे तो प्यार बढ़ा, ठीक है, हो गया, ये हो गया ना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हाइड्रोकार्बन है, पीएच वाला है, एसिड बेस है, सल्फर है। नहीं, वन नहीं है, इसमें 60 होता है, सो नन ऑफ द above is the answer, ठीक है। It contains 60 atoms, तो ये हो जाएगा यहाँ तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट इज c/137, पता नहीं है इसके बारे में। c/137,
ओके नेक्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इट प्रोड्यूसेस वाटर, तो ये पता है. एन एलिमेंट एक्सेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost orbit. What is the formula of its compound with hydrogen? XH4. इजी है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, हैवी वाटर इज द वाटर the temperature of which is kept constant at 4 degrees Celsius, in which the insoluble salts of calcium and potassium are present. ये तो करेक्ट लग रहा है. In which isotope takes place hydrogen, one isotope. In which isotopes takes place of hydrogen? In which isotopes takes place of कार्बन ऑक्सीजन सॉरी. तो क्या है? In which isotopes takes place of हाइड्रोजन, क्योंकि ड्यूटेरियम वाला हो जाता. प्लीज डिस्चार्ज मत होना, थोड़ी देर रुक जाओ, आधे घंटे. ये हो गया डी2. हैवी वाटर की बात हो रही थी ना. केमिकल फॉर्मूला इज डी2 एंड वन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, आंसर हो जाएगा सी. द गैस विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द गैस विद हाईएस्ट. अरे यार ये नाइट्रोजन. The most abundant gas in the Earth's atmosphere is nitrogen, of course. ठीक है. The gas, water gas is a mixture of CO plus H2, carbon monoxide plus H2. ठीक है. मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं. ठीक. नेक्स्ट क्या है? सल्फर नाइट्रोजन हेलोजन वाला. ठीक है. ब्रोमीन इज कलरलेस गैस, ब्राउन सॉलिड, रेड लिक्विड होगा. ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड, आई गेस डी. ओके. Human skin burns during swimming in lake or pond due because of infrared or because of chlorine. Because of chlorine. Okay. भाई मेरा फ़ोन फिर से बीच में ऑफ होने वाला है. Hydrofluoric acid is not kept in glass bottle because ठीक है. Hydrofluoric acid is not kept in glass bottle because it reacts with visible light, silicon dioxide of glass, sodium oxide of glass, aluminum oxide of glass, hydrogen reactive that reacts with silicon dioxide in glass, causing bottle to explode. ठीक है. Silicon dioxide. Okay. What is the shape of sulfur hexafluoride? Well, hexa है ना, तो six नहीं. Sulfur hexafluoride has octahedral shape. Don't know. उसके बाद क्या है? which of the following laughing gas nitrous oxide. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे?
Which of the following gases is considered as atmospheric pollutants? Oxygen, sulfur dioxide. कितनी देर चल रहा है? 7:31 में है ना? ठीक है. Which of the following normal gas is not present in air? No, not air. Radon नहीं है. Radon नहीं है. So this is the answer. Radon नहीं है. इसके बाद क्या है? Which of the following has pH value 7? Neutral, pure water. Acidic and greater than 7 is considered basic. Pure water is considered neutral. तो ये हो गया. If the following solution has a pH value more than 7, तो 7 से ज़्यादा तो बेसिक का होगा, तो ये भी हो गया. 7 से ज़्यादा बेसिक का यूज़ होता है. ठीक है, बेसिक. इतना न मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं तुम्हारा वाटर है. प्योर वाटर से. तो ये हो गया. तो लिखो pH of a solution changes from 3 to 6. The ion concentration will decrease with 10 times. Decrease by 10 times. Decrease by thousands and thousands. Oxygen is absent. Hey, hi, nice to see you again. मेरे को कुछ बोलना भी था. That your last message जो तुम करके गए थे, मैं देख नहीं पाई थी उस टाइम, and it was so sweet. Like I was smiling for whole time. उसकी वजह से. You are sweet. The pH of solution changes. The pH of solution changes from 3 to 6. The H plus ion. Okay. Oxygen is absent. Kerosene. Nice. Oxygen kerosene to cover liquid which is derived from petrol. Is a mixture of hydrocarbon and does not contain oxygen. Okay. Which of the following is correct? ये have a pH greater नहीं कम हो जाएगा. और blue to red, because blue to red ही होगा, क्योंकि क्या है ना कि एसिड बहुत मानो गर्म है, तो वो किसी चीज़ को रेड में टर्न कर सकता है. So this is red. Okay, done. Now next, what is the usual property of oxides of group 3 and 4? Both acidic and basic. हाँ, एक्चुअली उसके बाद ना सेशन भी एंड करना है, क्योंकि 4 घंटे हो जाएंगे हमारे. तो 8:15 में शायद ये सेशन एंड होगा. 8:15 में. What substance forms an acid when heated with another substance? Sodium chloride with
any other substance lead to the formation of an acid? One substance forms an acid when heated with another substance. Heating sodium chloride which among the following is the main constituent of biogas? तो ये मीथेन हो जाएगा इसमें. Methane. Okay. Some metal oxides react with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphibolic oxide. The example of HCl2O3 और ये जेरानो है ना. लीड हो गई. That's sweethearts. Okay, ओदे मुझे जगह नहीं. क्या हो गया? Next क्या है? Acid react with metal carbonates to liberate gas. Okay, acid react to liberate with carbon dioxide. To release carbon dioxide gas. Oh my god, क्या हो गया? You have been provided with 3 tests. One of them contain distilled water and another 2 acidic and basic respirable. Which of them will turn red to blue? Basic. Base, okay. Why does dry acid gas not change the color of dry litmus paper? Acid acts as a dehydrating blue when dry in the presence of only in the presence of ये C हो जाएगा इसका आंसर. Next. मतलब इससे ठीक है. हाइड्रोकार्बन में टू है ना, तो अल्कीन ठीक है. उसके बाद ये वैसे तो फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Unsaturated hydrocarbon is C. इथीन ठीक है. Unsaturated hydrocarbon is ethene. Ethane is unsaturated hydrocarbon. Which are the fundamental elements of all organic? Which is the fundamental element of all organic compounds? What is the fundamental element of all organic compounds? कार्बन यार. ठीक है. एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन. ठीक है. मम्मी अब नहीं हो रहा मेरे से. भाई बस 15 मिनट है. बताओ इतना नहीं करोगे तो क्या ही करोगे. हो
हो जाएगा, it's easy, easy. How is hydrogen stored physically? In the form of hydrides, in the form of water, compressing hydrogen gas, or that other, in the form of hydrides, in the form of water, by compression, hydrogen gas, C हो जाएगा इसका आंसर. Okay. तेरा पोज है ओके, मतलब चल जाएगा शायद, आधा घंटा है अभी, हो जाएगा. चलो. ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन kerosene. मेरे जैसे मैं तो करेंगे ऐसे cigarette lighters. ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, रेडॉन. ब्यूटेन, तो ब्यूटेन एलपीजी में भी, ब्यूटेन सिगरेट लाइटर्स में भी है. सो ब्यूटेन. ओके, ब्यूटेन is C4H10 because butane formula is C4H10. So natural ठीक है. Natural gas liquid. Here also organic compound. The main component of greenhouse gas is carbon dioxide. So yeah. अरे सारे ऑप्शंस देखने थे ना, सुमंत क्या करो तुम. 9 का हो गया. Number of sigma and pi bonds in benzene is 3 3 3 6 12 3 12 6. Sigma bond is 12 and pi bond is 3. ये मेरे नोट्स में है, just check it there. Oh my god. 6 sigma bonds. 6 sigma bonds में carbon. Coal is used for burning malone, eating, making boats, burning of course. क्या है balloon? burning. ठीक है. Alcohol can be converted to carboxylic acid by alcohol can be converted to carboxylic acid by alcohol. Oxidation. Okay. मेरी नजर का सफर तुझ पे आके रुके. alcohol can be converted by, ठीक है ये हो गया. next oxidation. इसके बाद fermentation of sugar. Fermentation of sugar leads to what? Fermentation of sugar leads to methyl alcohol, ethyl alcohol. Okay, next. Dry is solid CO2, तो ये तो पता है. पे अरे मेरा mic on है. Which of the following does not consist carbon? No, none of this.
Sorry. Those are the following does not consist carbon. None of this. This is the hardest of the following. So diamond is the hardest thing. Okay. Since ये कार्बन का है तो होगा ही और वैसे यूरेनियम है. Uranium is heaviest, not hardest. Diamond is the hardest. ठीक है ये हो गया. What are the gas emitted from vehicles? कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, सारे होते हैं. मार्स गैस क्या होता है यार? ये तो सुना सुना सा लग रहा है. What is this? Okay. To make the steel hard requires increase in क्या? Silicon, गलत. Carbon, carbon. A. अच्छा ठीक है. ये हो गया A. Okay. Okay. Diamond is an allotrope of carbon. मैं दूसरी तरफ कुछ is the following statement about diamond and graphite is true. Is the following statement about diamond and graphite is true. सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट नहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है. सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिग्री ऑफ हार्डनेस नहीं 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 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकता है. 9 का बी है. 9 का ई. ओके नन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे सेम है यार? यही तो डिफरेंस है. ओह ये तो सिली मिस्टेक कर दी. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द M4 is carbon is sugar charcoal. Very strange, but I don't know this. Oh my god, my phone 10%. भैया गलत हो रहा है. फिर से मेरा फ़ोन धोखा देने वाला है. एंड इट्स 10% और मेरे को आधे घंटे और पढ़ना है. Oh god. In context of lab grown diamonds, LGDs, what is used as a diamond seed? Graphite. Okay. ठीक है. धीरे चला तो 10 मिनट और 10 आधे घंटे चल ही सकता. मैं करके मेटल ले लूँ. मैं कर मेटल मिक्सचर एज. ठीक है 10 मिनट्स में ब्रेक लेंगे और फिर 4 मिनट लगा के बात कर सकते हैं. Mercury metal mixture is
हाय अभिजीत। यार मेरा फ़ोन देखो, अभी आधे घंटे और पढ़ना है और मेरा फ़ोन 10% है। mercury metal mixtures, अरे यार, mercury metal mixtures, mercury mix alloy, C हो जाएगा। Process an alloy of it is an alloy of copper and zinc. Okay, next. Copper and rusted zinc, bronze consists 88%. German silver has almost copper, 50% copper. ब्रोंज का तो पता है, कॉपर एंड टिन होता है। और जर्मन सिल्वर में भी कॉपर 50%। ओके, 50% कॉपर। ओके ओके। हाँ, 8 बजे मैं भोजन करने जाऊंगी। लेकिन एक्चुअली ये सेशन स्टार्ट हुआ था 4:15 से, तो 8:15 पे एंड होगा। Brass is formed by zinc and copper. ब्रास, हाँ ठीक है, ये तो ऊपर है ना। चलो। Stainless steel is an alloy of iron and chromium. नहीं, गलत है। आयरन एंड क्रोमियम नहीं होगा। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, अच्छा सारे मिला के। सो आंसर इज मोर देन अबव। सिलिकॉन इज नो, ठीक है। वाइल ठीक है। सो दिस इज आयरन, क्रोमियम, निकल भी है नहीं। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज एंड कार्बन। तो ऑप्शन ई क्यों दिया हुआ है? पता नहीं क्यों दिया है। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ी हूँ एक्चुअली। बायो मेरा पढ़ के मतलब सुबह पढ़ा था ना बायो, तो हम लाइक कि कल उसको अच्छे से याद करते, जो जो चीज़ न्यू था वो कल याद करेंगे। और आज फिर अभी केमिस्ट्री का PYQs देख रहे हैं, कैसा क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का, और उसमें से मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है ऐसा। Which of the following metals does not corrode? Platinum and gold, both do not corrode. कॉपर तो होता ही है, तो ये हो गया platinum and gold. Do not corrode. Gold and platinum stable metals that are resistant to oxygen acid. They are less reactive than do not corrode का, ठीक है, ये हो गया। ओके, कार्बन एंड सुबह 4 बजे बायोलॉजी कल करेंगे। हाँ, कल सुबह 4, अभी कल याद करेंगे, मतलब जो जो चीज़ आज तो रीडिंग हुई है ना, रीडिंग हुई है और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ, कल कल याद करेंगे। ओके, the gas which comes out of opening soda does
ऐसे पता है, एक दिन करके प्रेशर भी हो जाता है, और ऊपर से कल जैसे करने पे ना ऐसा होगा कि 2 दिन लगातार उस चीज़ को पढ़ना हो जाएगा, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए सोचा आज केमिस्ट्री अभी कर लेता है। The gas which comes out of opening ये तो हो जाएगा कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। The soda of soda, the gas which comes out on opening a soda water bottle as carbon dioxide comes out of, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा नहीं, तो यही होगा। वैसे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड, सो दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं, सेम हार्डनेस नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट नहीं, और सेम केमिकल रिएक्शन। तो ये सेम केमिकल रिएक्शन ये हो सकता है यार, डी होगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब क्या करूँ? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जिंदगी सवार दो, एक नई बाहर दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो सो चमत्कार हूँ। ये हो गया मेरा। अभी तक ये खत्म हो चुका होता, मेरे से धोखा हुआ है। यार ये लाइव पे ना म्यूट नहीं करने का यही यही सब है, मतलब मेरे मुंह से यही सब निकलते रहता है करते हुए। तो ये लाइव मेरा अनफिल्टर्ड वर्जन शो कर रहा है। डोरेमोन देखती नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे को उसका सॉन्ग बहुत पसंद। पहले पहले तो बहुत देखते थे दिन भर हम, मतलब यही था हमारा, मतलब हम भाई बहनों का, कि जब आओ स्कूल से डोरेमोन या जो भी, अभी भी टाइम मिले तो देख ले। हाँ यार, तो तुम तो 10th में ही हो, लेकिन 10th की बात नहीं है यार, मेरे को तो अभी भी बहुत पसंद है। सिंचैन डोरेमोन मेरा फेवरेट है, सिंचैन तो सबसे ज़्यादा। अगर कोई चैट करेगा तो क्या बोलेगा, ये लड़की डोरेमोन देखती है। What happens to the weight of iron? यार इसमें बुराई क्या है? सबको देखना चाहिए, तो प्यारा शो है। हम्म, ये हो गया था। अभी तो हुआ। Mercury metal mixture is mercury mixture. Okay. What is the common name of Sinchan is the most favorite. What is the common name of carbon hydroxide? Slick, slick lime है ना? ठीक है। अच्छा करते हो, देखना चाहिए। हमेशा वो माइंड चिल वाला रहता है। What is the common name of carbon hydroxide? Slip. ठीक है, ये हो गया। ये स्क्रीनशॉट हो चुका है। हाँ, मेरा भी डोरेमोन और सिंचैन दोनों फेवरेट है, सिंचैन सबसे ज़्यादा। व्हाट हैपेंस द, ओके, तो
8 बज गए हैं। आई थिंक मेरे को थोड़ी देर फ़ोन को चार्ज लगा देना चाहिए, देखने के बाद लगता है अभी बच्चे। तुम हो बच्चे, लगता नहीं तुम बच्चे हो। ओके गाइस, 8 बज गए हैं तो थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और मेरा कैमरा थोड़ी देर ऑफ रहेगा बिकॉज़ मेरे को फ़ोन भी चार्ज लगाना है, नहीं तो मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। इट्स 6%। उसके बाद सेशन रैप अप करेंगे। जिंदगी सवार दो कि नहीं बाहर दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यार सा चमत्कार हूँ। लगता अच्छा। आई थिंक सेशन फिर 8:30 तक चला जाएगा। ये अच्छा है, लाइव के चक्कर में मेरा ना पढ़ाई का एक्स्ट्रा हो जाता है टारगेट से आगे। आई शुड राइट हियर ब्रेक टाइम करके, है ना। Who is there? We are on break time. जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, तो प्यार समझो। दो लोग हैं ना तो हाय मैं, वो तो पता है तुम हो। हाँ, क्योंकि वो भी फीमेल वॉइस है ना, इसीलिए डोरेमोन की वॉइस भी फीमेल वॉइस है शायद। हाँ, एनी गाया है। What happens to the weight of iron when it rusts? I'm still studying, मतलब नॉट स्टडिंग, थोड़ा बहुत देख रही हूँ क्योंकि ख़त्म तो नहीं हुआ फिर से मेरा। What happens to the weight of iron when it rusts? Increases then decreases, increases for the long time। ऑप्शन नंबर ई होगा इसका। ओके, मेड ऑफ जिंक तो क्या है? इलेक्ट्रिक बैटरीज मेड ऑफ जिंक। इलेक्ट्रिक, इसका आंसर होगा सी। लगता है आपने ही डोरेमोन में गाना गाया है। हाँ, मैंने ही गाया है। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो,
दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। Made of zinc, Al2O3, 2 SiO2, 2H2 is the chemical formula for Al2O3, 2 SiO2, 2H2 is the chemical formula of भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन। चाइना क्ले, मतलब चाइना क्ले का केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया, ये क्या है? और इसको क्या बोलते हैं? केओलिन। केओलिन क्या होता है? जिंक ऑक्साइड इज नॉर्मली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ zinc oxide is normally used in the manufacture of what? Explosives, paints, solvents। पेंट्स में आई गेस ना, पेंट्स में यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, लेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड बेसिक कार्बोनेट gets deposited on a metal after keeping it in air for some time। देखो मेरे ऐसे लिखा हुआ है ब्रेक टाइम, लड़की पढ़ रही है और कैमरा ऑफ है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हो क्या रहा है यहाँ पे, बट हो ये रहा है कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, इसलिए मेरा कैमरा ऑफ है। A layer of green colored basic carbonate gets deposited on a metal after keeping it in air for some time। That metal is that metal is called a layer of green color basic carbonate gets deposited। हाँ ठीक है, कॉपर पे हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, the heaviest metal among the following is okay, I think I should end this session क्योंकि ऐसे और ज़्यादा awkward सा लग रहा है, उससे बेटर है एंड ही कर देते हैं। लेट इट बी, हो जाएगा ये। हाँ खाते जिंक ऑक्साइड इज नॉर्मली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ, ये तो हो गया था। अभी द हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग, हेवीएस्ट मेटल यूरेनियम इज द हेवीएस्ट मेटल। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया? यूरेनियम इज द हेवीएस्ट मेटल। ठीक है, उसके बाद क्या है? वैसे तो फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू प्रिवेंट an iron frying pan from rusting। अप्लाइंग जिंक कोटिंग, जिंक का कोटिंग अप्लाई करके हो जाता है। सो सर इज ए ओके। नेक्स्ट क्या है? जिंक इज मोरेटेड, राइट। अभी तुम पढ़ाई करोगे फिर 8 बजे के बाद? चलो पता नहीं फ़ोन कब ऑफ हो जाएगा मेरा। अगर ट्राई करना कि सुबह का सेशन ज्वाइन करने का, बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। बट प्रोडक्टिव तो था, सो आई विल सजेस्ट कि यू कैन ज्वाइन। Heaviest metal among the following is uranium. Which of the following method is suitable to prevent an iron frying pan from rusting? तो ये हो गया। What is manganese used for? अभी कर ही रहा ओके। वाह,
और जब तुम्हारा लगे ना कि चलो डिस्टर्ब सा हो रहा है तो तुम ये भी बोल सकते हो कि माइक म्यूट करने या कुछ भी, क्योंकि ऐसे मेरे को अच्छा लगता है कि साथ में कोई पढ़े तो। What is magnets used for? Which of the following method is suitable to prevent iron from rusting? What is the magnets used for? Great. Magnets used for, तो ये हो जाएगा मैच बॉक्स फोटोग्राफी इंडस्ट्री मोर देन वन ऑफ द above. So answer is 32 country. Okay, next. What is the common name of calcium hydroxide? ये तो हो गया था ना. पता है अभी ये मेरा सारा पेज हो चुका था और दोबारा करना पड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट हो चुका होता, बट दोबारा करना पड़ेगा फिर। मेरा तो अभी मन भी नहीं है अब करने का। अब जिस दिन इसको अच्छे से याद, मतलब जिस दिन नहीं, कल ही याद कर लेंगे इसको, तो कल कर लेंगे फिर, मतलब याद और एडिट एक साथ। सॉरी, फिर से मेरे मुंह से निकल गया। रिवीजन हो जाएगा एक बार वन शॉट। हाँ, कल ही वो फिर से एक बार एडिट और रिवाइज एक साथ हो जाएगा। Dalton's atomic theory successfully explain law of conservation, law of constant, ये तो हो गया था। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। बी गलत हो, हाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं है ना। सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी। न्यूक्लियस ये सब कुछ ठीक है। अब यही करेंगे कल, रिवाइज याद करते हुए इसको एडिट कर लेंगे। अभी दोबारा करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। तुम जाते जाते एक क्वेश्चन बताओ कि एक्वा रीजिया, जिसमें कि गोल्ड भी डिज़ोल्व हो जाता है, गोल्ड डिज़ोल्व हो जाता है, उसका रेशियो क्या है और उसमें क्या क्या मिक्सचर में क्या रहता है, मतलब कौन कौन से एसिड्स रहते हैं। अरे वाह, वेरी प्राउड ऑफ यू। जब रेशियो पता है तो फिर एसिड्स तो पता ही होंगे आपको। नाइस नाइस, क्लैप फॉर यू। Which of the following substance thinner effect? Which of the following substance का show? Which of the following is not soluble in water? Not soluble in water. Calcium oxide is soluble in water. ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। The compound which on dissolution water makes the trade name of basic lead carbonate is white lead. What is the bond order of CO group? यूज करें। ये सब चैट में लिखो तुम, मेरा चैट बदनाम हो जाएगा। गोल्ड की चोरी करनी तो कर यूज कर, मत करो ऐसा। व्हाट इज द
पता चलेगा सब सब सोचेंगे यार ये तो गोल्ड चोरी प्रमोट करवा रही है। द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। सर कितना अजीब लग रहा है, सब एडिट हो चुका था मेरा, बर्बाद हो गया। नहीं तो अभी ज़्यादा खुशी होती कि चलो सब कंप्लीट हो गया, पर इट्स ओके। ये भी एक अच्छा प्रोडक्टिव सेशन था। अच्छा अच्छा, ऐसा है। After being exposed to air rather green, we should learn the metal is copper. ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना। Iron is obtained from which of the following minerals? ये है मेरे, ये तो इजी है यार। Untrue for bleaching powder. Bleaching powder oxidant chlorine after the reaction. It is more soluble in bleaching powder is soluble. नहीं, bleaching powder is not soluble in water. हाँ ठीक है। The metallurgical process in which a metal is obtained in a fused state is called smelting. बस आई विश कि अभी ये जो एडिट है वो भी सेव हो जाए। अच्छा अच्छा, नहीं पता राहुल ने गोल्ड कैसे, अच्छा ऐसे आते हैं क्वेश्चन अब। ओके ओके बाय अभिजीत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इट वॉज ऑल्सो प्रोडक्ट सेशन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि मेरा PDF उड़ गया, बट दैट्स ओके। हाँ हाँ ठीक है, ये भी बोल दिया कि 8:15 हो चुका है। चलो ठीक है, अब ये करते हैं, मैं चला भोजन करने, मैं अभी चली भोजन करने। ओके बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।